Okay, reactions of aromatic alcohols. Last reaction is Colby's reaction, very important reaction. Phenol treated with sodium hydroxide and forms sodium phenoxide, and after formation of sodium phenoxide, it will react with carbon dioxide and forms salicylic acid. Means 2 hydroxy benzoic acid prepared in the reaction of Colby's reaction, Colby's reaction. Here, electrophile carbon dioxide behaves as an electrophile. This electrophile is very weak electrophile. That's why sodium phenoxide will react easily with the carbon dioxide molecule, and 2 hydroxy sorry, uh, 2 hydroxy benzoic acid will obtain. This is known as salicylic acid. Now, third reaction of aromatic alcohols, that is Riemann-Tiemann reaction. This is also very one of the important reaction and name reaction, Riemann-Tiemann reaction. In this reaction, phenols are converted to salicylaldehyde. Salicylaldehyde means 2 hydroxy benzaldehyde. 2 hydroxy benzaldehyde is known as salicylaldehyde. वहाँ पे बेंजोइक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा फॉर दिस रिएक्शन में, रीमर रिएक्शन में 2 hydroxy benzaldehyde form. How this will be formed? When phenol treated with chloroform plus aqueous NaOH, then it will be converted to benzyl chloride, and this benzyl chloride substituted product, this will react with sodium hydroxide and it will form aldehyde compound, and it will react with in presence of acid and it will convert it to salicylaldehyde. Here, on treating phenol with chloroform in presence of sodium hydroxide, aldehyde group is introduced at ortho position of benzene ring, and this reaction is known as Riemann-Tiemann reaction. The intermediate substituted benzyl chloride is hydrolyzed in presence of alkali to produce salicylaldehyde. So simple, first phenol treated with chloroform in presence of sodium hydroxide. Phenol OH treated with chloroform CHCl3 is known as chloroform ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से यहाँ पे ये ग्रुप लॉक हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा, वो Na सोडियम फिनॉक्साइड, एंड here CH2Cl2 benzyl chloride intermediate form होगा. This compound is unstable compound. Here this one is intermediate and unstable product. This will react with sodium hydroxide NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर दिस group means CH2Cl2 benzyl chloride group will be converted into aldehyde group. ये benzyl chloride aldehyde group में convert होगा. यहाँ पे CH2Cl2 CHCl2 not CH2, क्योंकि कार्बन को 4 bonds होना चाहिए, 1 2 3 and 1 5 CHCl2 रहेगा. Then this group will be converted to ONA. यहाँ पे ऐसे रहेगा सोडियम फिनॉक्साइड. This is converted to aldehyde. After formation of this group, this compound, it will react with acid in presence of acidic medium. Sodium will be removed, OH and CH2. This is known as salicylaldehyde. Salicylaldehyde. 2 hydroxy benzoic acid is known as salicylaldehyde. क्लियर? तो आपको एक नोटिस करना है यहाँ पे benzyl chloride after reaction with sodium hydroxide, it will converts to aldehyde function group, means ortho position. This is known as ortho position. This ortho position having hydroxy group. After reaction with acid, it will be converted into salicylaldehyde. This reaction is known as Riemann-Tiemann reaction. यहाँ पे आपको बताएंगे OH सोडियम हाइड्रोक्साइड का H2O रिमूव होगा,
सोडियम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। नेक्स्ट CH3 में यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आप तो पोजिशन पे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा H प्लस रिमूव होने के बाद यहाँ से H प्लस और यहाँ पे CH Cl3 है, 3 क्लोरीन से, इसमें से क्लोरीन प्लस माइनस में रिलीज होगा Cl माइनस, तो कार्बन को ऊपर प्लस रहेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ से H प्लस रिलीज होगा तो बेंजीन पे प्लस साइन रहेगा, ये प्लस ये माइनस मिलके HCl बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा, ये CH यहाँ पे अटैच होगा मतलब CHCl2 CHCl, ये वही देखो स्टार्टिंग में है, तो ये CHCl यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म CHCl, ये यहाँ पे अटैच होने के बाद ये बेंजल क्लोराइड है। आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स ले लो, NaOH NaOH, क्लियर, 2 मोल्स लेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड रिलीज होगा, क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट होने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट है तो सोडियम क्लोराइड NaCl 2 मोल्स रिलीज हो जाएगा, तो ये क्लोरीन की जगह पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस नहीं है, इधर लिख रहा हूँ, तो डायरेक्ट 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप OH एंड अनदर वन OH ग्रुप यहाँ पे है, क्योंकि मॉलिक्यूल पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो वो अनस्टेबल होता है, तो इसलिए यहाँ से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो क्या फॉर्म होगा CHO, यहाँ पे ONA CHO, देखो CHO आइडियल ग्रुप फॉर्म है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड रिलीज होगा, उसके बाद 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ये ग्रुप फॉर्म है, ये फॉर्म बनेगा, आपको तो इजी पता है, तो ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम भी रिप्लेस बाय द H प्लस एंड then salicylaldehyde will accumulate. This reaction is Reamer-Taylor reaction, one of the important reaction. And the fourth one is reaction of phenol with zinc dust. Fourth one, reaction of phenol with zinc dust. Reaction of phenol with zinc, zinc with zinc dust. Zinc powder. This one is fourth one. So this reaction, Reamer-Taylor reaction. The next one is reaction of phenol with zinc dust. यहाँ पे क्या हो, phenol is converted to benzene on heating with the zinc dust. तो यहाँ पे reduction reaction होगा phenol on heating with zinc, then it will forms benzene. तो oxygen remove होगा, तो by product zinc oxide form, ये benzene form होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, क्लियरली ऑक्सीजन लेके जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, वहाँ पे रहेगा, तो कॉमन वाले फॉर्म में बेंजीन फॉर्म होगा, बाय प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड। एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, सॉरी here removal of oxygen is known as reduction reaction, and next one is oxidation reaction, oxidation of phenols, oxidation of phenols. When phenols are oxidizing in presence of oxidizing agent like strong oxidizing agent sodium dichromate in presence of H2SO4, then it will be converted into benzoquinone. Benzoquinone means ketone functional group form. Here, phenol, sodium dichromate, potassium dichromate K2Cr2O7 है. Similarly, यहाँ पे sodium dichromate है Na2Cr2O7 in presence of H2SO4, ऑक्सीडेशन will occur. ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये Na2Cr2O7 वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन
Again, then C double one बेंजोक्विनोन विल बी अपडेट। यहाँ पे सर्कल ही रखेगा क्योंकि ऑलरेडी ये कार्बन को 4 बॉन्ड्स हुआ, ये कार्बन को 4 बॉन्ड्स हुए, तो यहाँ पे pi बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन QUI benzoquinone form. This one is quinone, an oxidation of these reagents, then quinone will be converted into benzoquinone. So these all are the chemical reactions of aliphatic and aromatic alcohols. यहाँ पे अभी तक preparation of aliphatic alcohol, aromatic alcohol, physical properties of aromatic alcohol, next chemical reaction of aliphatic aromatic alcohols are completed. Next, we are going to discuss some important alcohols. That is some commercially important alcohols. Is a theory, only preparation I will explain. Theory you will learn yourself. Some important alcohols are here given. Only two types of alcohol. One is methanol and second one is ethanol. The first one, methanol. Methanol. Methanol means CH3OH is known as methanol, methyl alcohol, otherwise methyl alcohol. The preparation of methyl alcohol is here. Methanol is also known as food spirit. This is important. Methanol is known as food spirit. It is known as food spirit. Common name was produced by destructive distillation of wood. Today, most of the methanol is produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure and temperature and in presence of zinc oxide and chromium oxide as catalyst. So here, first one, so carbon monoxide treated with hydrogen means reduction process, zinc oxide and chromium oxide Cr2O3 in balance of 200 to 300 atmosphere pressure and 573 to 673 Kelvin temperature, and at this condition these two are converted to methanol. So this is the preparation of methanol method. Methanol wood spirit, it is prepared by carbon monoxide treated with hydrogen in balance of this condition reaction conditions, then methanol will obtain and its uses and are given here. Methanol is colorless liquid and its boiling point is 333 Kelvin 37 Kelvin temperature. It is highly poisonous in nature. Ingestion of even small means little amount of methanol बॉडी में जाएगी तो क्या होगा? Blindness. Large quantity causes even death also. Methanol is used as solvent in paints, varnishes and cheaply for making formaldehyde. Formaldehyde को प्रिपेयर करने के लिए भी methanol को यूज करता है. These are the commercial use and effect of methanol and preparation of methanol. And second one, ethanol. You know very well what are the uses and effect of ethyl alcohol. तो यहाँ पे second one, ethanol, otherwise ethyl alcohol. Ethanol CH3, CH2OH, otherwise C2H5OH, ethyl alcohol or ethanol. This ethanol is prepared by commercially prepared by fermentation method. Fermentation तो आपको पता है. The oldest method is from sugars. The sugar in molasses, sugarcane, or fruits such as grapes is converted to glucose and fructose, both of which have the formula C6H12O6. In the presence of an enzyme invertage, enzyme glucose and fructose undergoes fermentation in presence of another enzyme, chymase, which is found in yeast. In simple
शुगर केन में से मोलासिस होता है। मोलासिस को मोलासिस से फर्स्ट मोलासिस मीन्स शुगर केन में क्या हुआ, सुक्रोज होता है। सुक्रोज by the treating water molecule it will be converted into glucose and fructose molecules. These glucose fructose molecules by the treatment of enzyme like zymase or invertase it will be converted into first zymase sucrose will be converted to glucose and fructose. After formation of this glucose fructose treated with zymase it will be converted into alcohol. Sorry, sucrose in presence of invertase it will be converted into glucose and fructose. And after formation of glucose fructose in presence of zymase enzyme it will be converted to ethyl alcohol. Clear. शुगर केन मोलासिस में क्या होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज फॉर्मूला C12H22 react with water in presence of invertase enzyme. Invertase invertase enzyme invertase enzyme. Then C6H12O6 plus C6H12O6. This one is glucose. This one is fructose. What is the difference between glucose and fructose? Molecular formulas are same, but its functional groups are different. That's why glucose and fructose are known as functional group isomers. तो ग्लूकोज में आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं एंड फ्रक्टोज में कीटो फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक, after formation of this glucose fructose, here C6H12O6 in presence of zymase enzyme. Zymase enzyme, it will be converted into C2H5OH, ethyl alcohol, and converted to carbon dioxide. These two enzymes are comes from yeast. Okay. Next one, uses etc. Learn yourself. And another one topic is important, that is denaturation of alcohol. Denaturation of of alcohols. Denaturation of alcohol, one of the important question for 2 marks. Denaturation of alcohol means the commercially alcohol is made unfit for drinking by mixing in it some copper sulfate and pyridine. It is known as denaturation of alcohol. It means alcohol को unfit for drinking. तो ड्रिंकिंग होगा फर्स्ट, ड्रिंकिंग अल्कोहल को उसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट एज वेल एज pyridine ऐड, ये दोनों ऐड करने से वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होगा. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज denaturation of alcohol. Commercially adding of copper sulfate and pyridine to the alcohol, that is known as denaturation of alcohols. तो ये दोनों ऐड करने से उसका कलर चेंज, ये ऐड करने से कलर चेंज होगा, ये ऐड करने से उसका टेस्ट और स्मेल चेंज होगा. So this is known as denaturation of alcohol. Now we completed complete alcohol, complete phenols. Phenol अल्कोहल कंप्लीट होगा. इन दोनों के बारे में आप टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लर्न कर सकते हैं. ओनली द क्रिटिकल मैटर ये वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ईथर्स. दिस टॉपिक इज रिमेन ईथर्स. तो ईथर्स में क्या करना है, नोमेनक्लेचर के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया. ओनली नाउ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स. तो प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर का होगा तो लेसन कंप्लीट. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ethers. R1 here. First one, preparation of ethers by dehydration of alcohol. This reaction is very important. By dehydration of alcohols. First preparation method of ethers by dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols.
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको पता है लास्ट क्लास में डिस्कशन किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिकॉज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा तो अल्कीन फॉर्म होगा डिपेंड ऑन डिफरेंट temperature conditions depend on different temperature conditions alkene फॉर्म होगा एज वेल एज ethers फॉर्म होगा तो यहाँ पे सेम डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल को ही रिमूव करना है अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को ही रिमूव करना है बट अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के टाइम पे depend on the temperature two types of products will obtain one is alkene and second one is ether तो alkene ether किस पे डिपेंड होता है टेम्परेचर पे डिपेंड होता है दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन is known as temperature dependent reaction compulsory temperature will decide the product अपने को ईथर चाहिए तो डिफरेंट टेम्परेचर को मेंशन करना है अगर अल्कीन चाहिए तो डिफरेंट टेम्परेचर को मेंशन करना है तो फर्स्ट यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल at high temperature C2H5 ethyl alcohol in presence of dehydrating agent like H2SO4 concentrated H2SO4 sulfuric acid at 443 Kelvin temperature 443 Kelvin temperature होगा तो alkene form होगा means EQ टू कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे टू कार्बन है तो टू कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट अल्कीन विल obtain at 400 Kelvin temperature reaction is temperature dependent reaction and another one C2H5OH ethyl alcohol in presence of concentrated H2SO4 413 Kelvin temperature 413 Kelvin temperature it is converted to ethoxy ethane diethyl ether otherwise ethoxyethane will be obtained ethoxyethane or diethyl ether will be obtained this reaction is purely temperature dependent reaction come exact 413 kelvin temperature होगा तो ether form होगा 443 kelvin temperature होगा तो alkene form होगा but here in these two reaction occurred dehydration means दोनों रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा ये कॉमन फिर लो टेम्परेचर में ईथर्स फॉर्म होगा हाई टेम्परेचर में alkenes फॉर्म होगा नेक्स्ट we are going to see the mechanism of preparation of ethoxyethane from alcohol alcohol में से ethoxyethane किससे फॉर्म होता है सर रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे क्योंकि हम लोग ईथर का डिस्कशन कर रहे हैं तो ईथर का ही वहाँ पे अल्कीन किससे फॉर्म हुआ अल्कोहल में मैकेनिज्म चाहिए तो ईथर्स में ईथर किससे फॉर्म होता है उसका मैकेनिज्म चेक करना मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ठीक है okay first this reaction is acid catalyzed reaction because in presence of H2SO4 then in first reaction C2H5OH react with acid and this reaction follows compulsory SN2 reaction mechanism binuclear nucleophilic substitution reaction SN2 reaction mechanism okay and here oxygen having two lone pair of electron hydrogen with H plus will attack an oxygen C2H5O hydrogen oxygen get positive sign and second step this oxygen will react with means this molecule will react with another one molecule of ethyl alcohol second one C2H5OH C2H5OH treated with that molecule C2H5H plus यहाँ पे क्या होगा molecule already another one molecule of ethyl alcohol having two lone pair of electrons on the oxygen तो two lone pair of electron on the oxygen होगा तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा H2O molecule eliminated यहाँ पे two lone pair of electron this will react on the carbon of this molecule तो इसलिए आपको ये molecule को ऐसे लिखना पड़ेगा CH3 CH2 C2H5 CH3 CH2 OH
ध्यान से सुनो। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे अनस्टेबल है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन में से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल रिमूव होगा, कार्बन के पॉजिटिव साइन है, तो कार्बन के जो पॉजिटिव साइन है उसको न्यूट्रल करने के लिए ये ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट है सेकेंड वन C2H5, मैं यहाँ पे नहीं लिखा, इधर लिखा C2H5, वो हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, हाइड्रोजन, this hydrogen, and this oxygen attached with this CH2 and CH3, CH2 CH3, वो H C2H5 सेम C2H5, तो ये ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड्स हुआ 1 2 3, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये तो ये पॉजिटिव साइन को न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस को रिलीज कर, क्योंकि ये कैटलिस्ट है एसिड कैटलिस्ट, तो H प्लस रिलीज होगा, H प्लस रिलीज होगा तो C2H5, वो C2H5 प्लस H प्लस रिलीज हो, स्टार्टिंग में यूज किया फिर लास्ट में रिलीज हुआ, that's why this H plus is known as catalyst, acid catalyzer reaction of ethoxyethane will obtain by the this reaction mechanism at low temperature. And here acid dehydration of alcohols to give an alkene is also associated with the substitution reaction to give an ether. The method is suitable for the preparation of ethers having primary alkyl group only. Primary alkyl group होगा तो this method will be possible. Next, the alkyl group should be unhindered and the temperature be kept low. Otherwise, the reaction favors is secondary or tertiary about which you will sorry favors the formation of alkene. अगर लो टेम्परेचर मेंशन करेंगे तो ईथर्स प्रिपेयर करेंगे, ईथर्स प्रिपरेशन होगा, एट हाई टेम्परेचर होगा तो alkenes prepare. Finally, primary alcohols in presence of concentrated H2SO4 at 413 Kelvin temperature, that means low temperature, ethers will obtain. In case of secondary and tertiary alcohols in presence of concentrated H2SO4, by the reaction mechanism is SN1, then alkenes will be obtained. तो ये पैराग्राफ का पूरा इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पे क्या सेकेंडरी टेरिशरी अल्कोहल्स लेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा बट अल्कीन्स फॉर्म होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म इज SN1 mechanism, but preparation of ethers in presence of concentrated H2SO4 at low temperature, that means 413 Kelvin temperature, then mechanism of reaction is SN1 reaction, SN2 reaction mechanism, bimolecular nucleophilic substitution reaction। तो SN2 mechanism को फॉलो करके ईथर को फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंडरी टेरिशरी अल्काइल होगा तो SN1 रिएक्शन को फॉलो करके अल्कीन को फॉर्मेशन करेंगे। These are the preparation of ethers from dehydration of alcohols. Next, we are going to discuss preparation of ethers, another one method, that is Williamson synthesis. Williamson synthesis, second preparation method. Williamson synthesis. Synthesis means production, preparation. Okay, correct. Here, Williamson synthesis. Williamson is the name of scientist. It is an important laboratory method for the preparation of symmetrical and unsymmetrical ethers. In this method, an alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide. तो ये reaction very important. Symmetrical and asymmetrical alkene को prepare करेंगे. Starting में first reaction dehydration of alcohols. From dehydration of alcohols, we can prepare only symmetrical alkenes. क्योंकि ethoxyethane C2H5O C2H5 ये symmetrical alkene, symmetrical alkene sorry ether, सिमेट्रिकल ईथर्स को ही प्रिपेयर कर सकता है। कौन सा मेथड से? फर्स्ट मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स। व्हाट आर द सिमेट्रिकल ईथर्स? सिमेट्रिकल ईथर्स मींस
ऑक्सीजन पे लेफ्ट राइट साइड सेम अल्काइल ग्रुप होगा तो वो सिमेट्रिकल ईथस होता है। मीन्स इथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन सेंटर में रहेगा कंपल्सरी, ईथस का फंक्शनल ग्रुप है। तो ऑक्सीजन के बोथ साइड लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल अल्काइल ग्रुप होगा तो ये सिमेट्रिकल ईथस रहेगा। अगर एस अनइक्वल अल्काइल ग्रुप होगा तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा तो वो एसिमेट्रिकल। एग्जांपल मिथॉक्सी इथेन, तो ये दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा तो दैट इज नोन एज एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ईथर्स, ये एसिमेट्रिकल ईथर रहेगा। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन फर्स्ट वन alkyl halides are main reactant. These alkyl halides react with alkyl sodium alkoxide compound, then it will be converted into ethers. General reaction from RX react with RO in sodium alkoxide. This will convert to ROR and byproduct is NaX. तो ये दोनों रिलीज होगा, NaX सोडियम हाइलाइड रिलीज होगा एंड ROR ईथर विल ऑब्टेन। यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर यहाँ पे सेम रहेंगे तो सेम आर आर रहेंगे तो सिमेट्रिकल, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा तो एसिमेट्रिकल हाइलाइड्स रहेंगे, मीन्स अल्काइल ग्रुप एसिमेट्रिकल रहेंगे। ठीक, and next, ethers containing substituted alkyl groups secondary or tertiary may also be prepared by this method. तो यहाँ पे secondary tertiary जो भी हो symmetrical symmetrical दोनों को prepare कर सकते हैं। The reaction involves SN2 attack of an alkoxyl ion on primary alkyl halide. This mechanism follows SN2 reaction mechanism. मतलब ये reaction में SN2 mechanism follow करेंगे। Okay. Next we will discuss mechanism of this reaction. Example, different type of alkyl group, primary one is secondary one is tertiary one is different type of alkyl groups will be attached in this reaction. मतलब यहाँ पे सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल यहाँ पे प्राइमरी alkyl group हो सकता है, सेकेंडरी alkyl group हो सकता है, tertiary भी हो सकता है, सेम यहाँ पे भी सिमिलरली। तो बेस्ड ऑन द alkyl group कंपल्सरी alkyl group पे डिपेंड है, ये दोनों सेम होगा तो सिमेट्रिकल, ये दोनों डिफरेंट होगा तो एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आर की जगह पे ये कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, जो भी हो मतलब अल्काइल ग्रुप को चेंज करना है एसिमेट्री होगा तो सोडियम अल्कोक्साइड में चेंज करना है। सोडियम अल्कोक्साइड में चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एसिमेट्रिकल ईथर्स फॉर्म होगा। वी विल डिस्कस एसिमेट्रिकल अल्कीन्स प्रिपरेशन टुमारो, ये ओनली इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे एक चेंज करना है, टर्शियरी ग्रुप टर्शियरी अल्काइल ग्रुप लेके रिएक्शन करना है, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एसिमेट्रिकल अल्कीन को प्रिपेयर करना है। ओके, next physical properties of ethers. So now tomorrow we will discuss the preparation of asymmetrical alkenes by Williamson synthesis. Symmetrical तो दो दोनों सेम नहीं तो symmetrical है, asymmetric different एक रिएक्शन हो तो कल एक्सप्लेन करूँगा। एक रिएक्शन है वो रिएक्शन के बाद नेक्स्ट physical properties of ether and then chemical properties of ether we will discuss next class.